Okay, so Aruna, the recording has started, and for the benefit of anybody who's going to see this video, I would like you to introduce yourself. Hello, this is Aruna Mehta. By profession, I'm an interior designer, but my core competency is more of execution and service oriented. Mhm. Design is like after experience, I am more into, I can get good. I have a good hold of design. Basically, I'm not a designer. I'm more of into a project management consultant and service oriented work I have done. I was with Kalpatru Real Estate for 5 years. Then I was with again one more real estate Tridhatu, which was in Chembur, and my last company was livespace.com. So I have 15 years of extensive experience working with interior designers. Wonderful, wonderful. So now, Aruna, in case if people want to take your services and want to connect with you, then how can they connect with you? Sir, I'm on Facebook with name Decor Passion. I have a Facebook page, Decor Passion, and my website is www.decorpassionmumbai.in. So that's decor passion dot Is my, is decor my passion. Facebook page. Now, give me your website again. It's decor passion Mumbai.in. decorpassionmumbai.in. Okay, Yeah. wonderful. Thank you very much, Aruna, for that introduction. How is it that I can help you today? What question do you have for me? Um, I I'm a little bit conscious because this is recording, but then I want to make best of this meeting today. Give Now, the best of this meeting. Yeah. Hardik, the problem is this problem is not of pandemic. See, it's not only due to this pandemic I'm facing this problem. This problem is the way we have started. When I made up my mind, okay, no, now I don't want to continue with my job. I want to have my own business. So then there was like directly jumping from a corporate job to doing my own work. So then I had my website. I did some local digital marketing for myself. I did my website. I had my Google business and all this small stuff with digital marketing. But I was not successful. Like I did not get a lead. The reason behind what I felt was I was lacking basically in content on the time of digital marketing, and secondly it was references. So I had some 4 5 sites I have done in this years, but they were all reference sites. Now I am stuck up today at this place. How do I go further, Hardik? Okay. So there is a very simple answer to this, and there is a broader, a little more complex answer also. So what is the simple answer? The simple answer is something that you can do like tomorrow, starting today, and you will start getting little benefit of it. Okay, and it will require you to think. The broader answer is, okay, how do you construct a mechanism that can make your business continuously get leads and business therefore? Okay, so that's a bigger, more complex version of what you can do with your business. Okay, so first I'll go with a shorter, simpler way of doing things. Okay, whenever somebody moves out of corporate and start their own business, most of them start exactly what they were doing in the corporate or something similar. Yeah, And and suddenly there is a realization that, oh my god, the people that I have in my phone book, none of them are useful. absolutely. Okay, so let's understand this, why this happens. This happens because whenever you work in a corporate environment, you don't work from A to Z. You only are somewhere in the between, and your job is restricted to that. Most people who jump and become entrepreneurs, they don't realize this when they are on the corporate job. And I know this because I have been a corporate employee myself, and I started my business of consulting. So I thought, oh, you know what I knew was people were appreciating, and therefore it is easy. If I start my own job, own company, and I do the same thing, people are going to appreciate. But that's not how it is. Why? Because there are a lot of things happening in the background that you are not aware of when you are in a corporate job, that now you got to do when you are a standalone business. One of the things is
having your network. If you don't know people who are either influencers or people who are direct customers or people who require your kind of services, then it's a very big struggle, because there is no way you can generate leads therefore. So what you should first focus on, you should first focus on creating that network. Now there are a number of ways of doing that. Okay, I'll tell you the most easiest way to do it. It's not something that is like you start doing today and tomorrow you will get results. Slowly things will start to change, but it will start changing immediately, and smaller things will change. So first thing, you got to identify all the projects that you did, they came from whose reference. Personal references. हाँ, पर जिसका भी रेफरेंस मिला उसको कैसे पता चला कि ये प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी है? Friends. Okay, what professions were they in and how did the conversation really happen? Like they were friends. They like kitty parties in our residences, and one of my college friend, and one of my one was a reference to a shopkeeper down in my residence. So this way I have done some 6-7 projects. Correct. So now you mentioned three things. Okay, one was that there was some discussion that happened in a kitty party that translated into a reference for you. Okay, can we repeat this scenario? Yeah, but so wherever we meet them, so it is like you started marketing yourself, so they feel they want to go away from you because you might talk about business as a so there is a very different way of doing it. My question is this platform available for you? Yeah. Correct. Second, you said that there was somebody in the Kirana store that gave you reference. I don't know how that happened, but I'm assuming कुछ तो conversation वहाँ पे हुआ होगा. Hardware store, right? So that means somebody was coming to buy something to improve the interior. So hardware stores is another place where you can go about generating leads, another platform where you can go about generating leads, right? Third is a casual friend, who just by the way happened to have a discussion of this kind. Understand from that casual friend कि वो discussion शुरू कैसे हुआ. This will only tell you a part of the whole solution. It will tell you कि discussions ये चीजों के बारे में शुरू होते कैसे हैं. Okay, very important to understand. Now let's say kitty parties है. तो kitty parties में जाके marketing नहीं करना है. But kitty parties में जाके आपका जो you are somebody who understands interior. Maybe you are not an expert at designing innovative products, but you are very expert at figuring out how a low budget beautiful thing can be done, right? Yes, absolutely. So you got to showcase that ability. How can you showcase that ability? Maybe by appreciating some part of the interior where you guys are having your kitty party and saying, hey, you know what, this is really beautiful. This looks beautiful because of blah, blue and whatever, right? Do you know that something like this can be done at this price? And leave it there. Okay. Leave it there. People should continuously experience you as an expert when it comes to understanding good aesthetics on interiors. And therefore, whenever they want to do interiors, they will think of, अरे यार अरुणा है ना, अरुणा बार बार बोलते रहती है इंटीरियर्स में ये कम कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं. उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, एक बार उससे बात करना. That's how the mechanisms will continue to increase. You don't have to sell. People want to buy, but people don't want to be sold. Okay, they want to buy, but they don't want somebody to come to them and sell it to them. So you simply showcase, give yourself opportunities in the kitty party to showcase your ability to identify good interiors, bad interiors. Like for example, you may say, hey, you know what, ये जो ग्रिल लगा है ना दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट यू नो व्हाट, इसको साफ करने में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका ऑल्टरनेटिव ना ये हो सकता है. एंड लीव इट देयर. डोंट से कम बाय मी. Let people get trust on you. People
feel that you are somebody they can reach out to for their interior problems. Just give me 1 second. Give me also one second. ठीक है, so that's one. Second, ये हार्डवेयर टूल्स वाला जो था, ठीक है, उसको बुलाओ. ऐसे हार्डवेयर टूल्स वाले जितने भी हैं, वॉट एवर एरिया दैट यू कैन वर्क विद, उन सभी लोगों को बुलाओ, उन सभी लोगों के साथ मीटिंग करो एंड थिंक ऑफ व्हाट इज इट दैट यू कैन डू फॉर देम टू जनरेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर देम. तो अगर वो बोल रहे हैं कि आपके पास हार्डवेयर टूल्स में ये 5 चीजें हैं, तो ये 5 चीजें के साथ मैं आपकी और 6 चीजें भी बेच सकती हूँ, आपके कस्टमर को कन्विंस कर सकती हूँ, अगर आप उसको मेरे पास बेचो. You understand what I'm saying? Yeah. So you have a meeting with these hardware guys, figure out what is it that we can do, what is it that they can do, and be able to collaborate. Ask me a question. Hardik, but you know what happens? See, I really want to make best of this, so I would like to talk very transparent. When we try to talk to these people, na, this paint wala or this hardware wala, they are looking already for a business. Like, so हम लोग जाते ही they like their अरे madam, yeah, they really give me good service, no doubt they really give good service because I have some principles of working. So I have a good vendor set of vendors to whom I work with and with the service thing. But you know, जब भी when I go and ask them for a work, it has happened in this last 2.5 years कि they are saying अरे हम आपको कहाँ, आप हमको दीजिए job. So here is what it is. Expectation is this only always. So उसका क्या तोड़ा, अभी उनको कैसे बताया जाए? So Aruna, there are 2 kinds of people. Okay, people who are with very very low level of intellect, they are not thinking, and then there are people who are thinking a little bit. Okay, you got to find this kind of people, not these ones. Okay, now where are these kind of people? Urban Clap. Urban Clap पे आप जाओगे तो you will find all kinds of people there, right? Those are people who have the brain कि मेरी सर्विस बेचने के लिए I have to register myself on an app like that. उतना अक्कल है ना, तभी तो वो लोग ने रजिस्टर किया. उन लोगों को कांटेक्ट करो और उन लोगों को बोलो कि I am wanting to sell your service only. आज वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को सीधा पेंट लगाना है, रेगुलर प्लेन कलर का दीवार करना है. But if you send that person to me, I can convince him on something that is more beneficial for you. How? I can probably tell him कि नहीं, ये दीवार पे ये सादा पेंट मत लगाओ, ये टाइप का पेंट लगाओ जिससे आपका दीवार बेटर लगेगा. I'm giving you a very stupid example. I'm sure you can build on this. इससे क्या हो जाएगा? He will see. आपको उसको समझाना क्या है? Assuming I am a painter or I am a hardware store, you got to communicate to me how if I send my customer to you, that customer will come back to me and buy more. So this Urban Clap, Sulekha, on all this thing, wherever I am there, I have listed myself there. But it's not listing. Then I'm not asking you to list yourself. Figure out the people who are the best people to give you references. Okay, on the Urban Clap. Okay. Call them and tell them I want to have a business meeting with you. I can help you sell more. Would you like to come and meet me? Okay. So आप उनको ये बोलो. Same with the people like in our area, all the shops, furnishing shops and all, or no? Anybody, see, चीजें ऐसी हैं कि जब आपका खुद का नेटवर्क नहीं है तो आपको किसी और के नेटवर्क पे डिपेंड होना पड़ेगा. पर कोई और आपको अपने नेटवर्क का एक्सेस क्यों देगा? तभी देगा ना जब उसका बेनिफिट है वो चीज में. करेक्ट है? तो आपको उसका बेनिफिट सोच के उसके पास जाना है और उसको बोलना है कि देख बेटा, अगर तुम मेरे साथ काम करेगा तो तुझे और बेनिफिट मिलेगा बिकॉज मैं ऐसा कुछ करती हूँ जो तू नहीं कर सकता. तो देन ही विल अलाउ यू टू हिज नेटवर्क. दैट मेक सेंस टू यू? Yes. अगर ये इन्फ्लुएंसर्स का नेटवर्क नहीं बनाओगे ना तो इट इज गोइंग टू गो टू मच स्लो फॉर यू. डिजिटल मार्केटिंग कब करते हैं मालूम है? डिजिटल मार्केटिंग इज, I use this word because I think this is the way I can talk about this and pass on my message. Digital marketing is simply for seduction, which means कि आप मुझे मिले हो,
आपने मुझे अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है, आई एम नॉट कंप्लीटली कन्विंस, और अभी मीटिंग खत्म हो गया, तो what option do you have to completely convince me after the meeting is over? Nothing, right? But if I see your videos, if I see your messages on social media, तो मैं जब भी वो चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अरुणा अरुणा दिखाई दे रही है बार बार, तो मेरे दिमाग से इंटीरियर अरुणा ऐसे चल रहा है. So I will connect with you again without you connecting with me and following up, Hardik क्या हुआ? That's where digital marketing can be used for services like yourself. Otherwise, digital marketing does not work for you. Not at least when you don't have a base to who you want to market. पहले वो base खड़ा करना जरूरी है. So what I did, Hardik, what I did is I decided my target audience basically, but that was based, as you said, I left corporate and I was trying to have that type of model because I had done that in a very good way over there also. So I was trying to target working people, working couples who wants to have lock and key and a good house in a good budget in a good time frame. So that was I was targeting. But I did some digital marketing, I don't know, but somewhere there was no response and I was really struggling very hard to get the clients. And you know, our site, one site goes for 6 months. I really cannot afford to sit on one site for 6 months. I need some at least 8 to 10 sites going all together if I'm giving that service and technical service and all this. But it is not happening, Hardik. See, Aruna, business is like gymming. It's like gymming, or it's like studying. जो पहले दिन पे आप जाओगे तो आपको ABCD ही सीखना पड़ेगा. ABCD will not help you write a letter. But unless you learn ABCD, then you learn words, then you learn sentences, then you learn punctuation, then you will be able to write letters. There is no quick fix to any business. But Hardik, but how much? What is the time frame I have to look for? Because right now at this point of time, I'm so disheartened. I just don't know. I feel अरे वो 15 years I did not do anything and अभी छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ. That is the situation because it's like some unsatisfied clients, how much service we give, then this pandemic. So at this point of time, you know, to think positive and to start again all over. So these are some of the things that I'll tell you. One, business is not easy. Second, business is not for everybody. Third, business means signing up for uncertainty. जिस दिन आपने बिजनेस करने का सोचा ना, अगर उस दिन आपने सोचा है कि सर्टेनिटी है, कॉर्पोरेट में जैसा महीने के एंड में पगार आने वाला था, you signed up for something that is exactly not that. So now you can't complain. बिजनेस तो भैया ऐसा ही है. But when it starts working, वो टाइम पे the business can give you some beautiful returns that you can never expect when you're on a job. तो रहता ना, शक्कर जितनी डालोगे उतना मीठा बनेगा. वो शक्कर यहाँ पे टाइम है और आपके बिजनेस का अपने आप को सोचने का तरीका है. जितना टाइम डालोगे, जितना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उतना मीठा बिजनेस बनेगा, जो कॉर्पोरेट में नहीं बन सकता है. कॉर्पोरेट में ज्यादा से ज्यादा आपको 20-30% पे प्रमोशन मिल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. यहाँ पे आपको 100%, 500% ग्रोथ मिल सकता है, पर यहाँ पे टाइम देना जरूरी है. एक्सपीरियंस को सलाम है, नेटवर्क को सलाम है, और किसी चीज को नहीं है. सो देयर इज नो क्विक फिक्स टू बिजनेस. So you want to allow me to complete. So that's one. ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरी चीज अरुणा, द फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? फ्रस्ट्रेशन आता है एक्सपेक्टेशन के. एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये इतने टाइम में होगा और वो नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, पर किस चीज के लिए रखना है? कि मेरे को ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है. यानी मुझे आज 5 लोगों के साथ मीटिंग करनी है, दैट्स इट. अगर मैंने 5 लोगों के साथ मीटिंग कर ली, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अपने आप से कि मुझे 5 लोगों के साथ मीटिंग करनी. ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 5 के पास से मेरे को 10 रेफरेंसेस आएंगे, 10 रेफरेंस. तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन में जो काम बन भी रहा होगा ना, वो भी नहीं बनेगा. I'll tell you right now, as we speak, I have a prospect
who calls me up and says, हार्दिक भाई, I want to start a consulting project with you. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को ये जो ब्ला ब्लू बताया, ओके, बट है ना आप है ना सिर्फ इतना ही मेरे को बताओ. मैं बोला वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई नो ओके अगर मैं उसको सिर्फ इतना ही बताऊंगा और आगे पीछे का नहीं बताऊंगा, he will fail. And when he fails, he will not say that I failed. He will tell me consultant failed. अभी अगर मैं desperate हो जाऊं तो मैं उसको वो चीज बेच दूंगा, बट वो बेचने से क्या होगा, मैंने खुद ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली. So it's very important at the start of the business to get right kind of customers and to get it in the right way. क्योंकि आज अगर आप 3 प्रोजेक्ट भी करोगे ना साल भर में, और वो 3 प्रोजेक्ट राइट कस्टमर्स के होंगे ना, तो वो 3 से आपको और 3 मिलने के चांसेस रहेंगे. So don't get desperate ever. Don't get frustrated ever. If you're getting frustrated, forget about the goal. Concentrate on the process. एक लास्ट चीज मैं बताऊंगा. मैं एक जन को फॉलो करता हूं, आपने नाम सुना होगा, सदगुरु. Okay, Sadhguru explains this very brilliantly. He says if you want rose, you can't sit down and do rose meditation. मतलब आप ये नहीं कर सकते चांट करो रोज 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 तो रोज, ऐसा नहीं होगा. You have to work with मट्टी, पानी एंड मैन्योर. तीनों में से कोई भी चीज रोज जैसी नहीं दिखाई देती. But if you work enough and you give enough time, then rose will come. You understand what I'm saying? Yeah. Ask. And now, as you said, this is our networking, whatever we are doing, that is for local people, wherever, whatever I have started, I have to start doing more, like very regularly. You have to think, you know how to do your work, okay, but you don't know how to do business. दोनों अलग अलग चीजें हैं. Yeah. Okay, you have to learn everything about business. और ये MBA कर दोगे ना तो भी नहीं आएगा. Already done. Wonderful, wonderful. I tell everybody, MBA का कोई मतलब ही नहीं है. Unless you actually practically do those things, ना, you will not understand. MBA is like telling you ये तीखा है, पर जब तक मुंह में नहीं डालोगे ना तब तक समझ में नहीं आता है तीखा क्या है. So right now, give yourself time to experience things. So you should be saying, am I meeting 5 people or 4 people every single day about with respect to my business? Whether I'm generating business or no is irrelevant. Am I meeting 4 people? That's your target. Okay. अगर मैं एक हफ्ते के अंदर मैं, which is 5 days, 5 4 are 20. If I've not met 20 unique people which are in line with my business, then I'm not doing good. Now, the moment you meet so many people and you continue to discuss your problem, ना, आपके दिमाग में automatically solutions construct होने शुरू हो जाएंगे जो आज नहीं हो रहे हैं, because input ही नहीं है, तो output कहाँ से आएगा? So, Okay. yeah, perfect. So you meant to say that jumping into digital marketing at the start was a wrong decision because there was not a single call. I did an SEO. Literally, I have got an SEO done for my website, and I did Just Dial. I did many more things along with it, and they all were paid services. But it's as simple as this. आप अपना घर रेनोवेट करने जाते हो तो आप क्या करते हो? गूगल करते हो. हाँ, और उसके बाद क्या करते हो? गूगल करते हैं तो वो नहीं, गूगल किया उसके हाँ, गूगल करके आप कौन से साइट्स पे जाते हो? इंटीरियर डिजाइनिंग की साइट. हाँ, मतलब कौन सा, लिव मोर पे जाते हो या कहीं और जाते हो, फर्नीचर्स देखने जाते हो? हाँ, फर्नीचर्स देखने जाते हो. करेक्ट है. Why do you click on live more or why do you click on these other branded websites, Urban Ladder या ये सब पे क्यों क्लिक करते हो? To buy things. Because you know that those websites are websites that you can trust. Yes or no? हाँ. करेक्ट. अभी मैं आपको बोलूं कि आप जाओ और राम पंडित इंटीरियर डिजाइनर ऐसा वेबसाइट है, आप क्लिक करोगे उसके ऊपर? क्यों नहीं क्लिक करोगे? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि ये है कौन. करेक्ट है. तो आप और मैं, हम राम पंडित हैं, लोग नहीं जानते हम कौन है. तो अनलेस पीपल नो who you are, we've not reached that point कि people are going to search and come on to our website because of who we are. ये प्रॉब्लम है ना. आप बहुत अच्छे हो,
बट आप बहुत अच्छे हो ये मुझे कब समझ में आएगा? जब मैं आपकी वेबसाइट क्लिक करूंगा। पर आपकी वेबसाइट में कब क्लिक करूंगा? जब मुझे समझ में आएगा कि आप अच्छे हो। तो अंडा चिक वो आओगे ना, अंडा पहला है या मुर्गी? कि मैं वेबसाइट पे तब क्लिक करूंगा भले आप फर्स्ट पे आ रहे हो। व्हेन विल आई क्लिक इट? व्हेन आई ट्रस्ट यू, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग से आपका कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना ही है तो यूज इट फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्केटिंग यानी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करो, उसमें डरो मत कि ओ शिट अगर मैंने मेरे आइडियाज को बोल दिया और किसी ने कॉपी कर लिया तो सो व्हाट? डोंट थिंक अबाउट दैट। नाउ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पुट इट अप ऑन सोशल मीडिया। कितने सारे कंसल्टेंट्स हैं, हर गली में एक कंसल्टेंट है, राइट? chances are everybody will copy. So what? Let them copy. A person who is copying is one step lower than you. That is why he is copying, right? So आप तो वैसे ही आगे हो. So what is the worry? Okay. What else you are suggesting me? Second thing that I would suggest is join networking forums. SME Chambers of India, the Indus Entrepreneur, BNI, ये ज्वाइन करो. But these are all क्यों ज्वाइन करो? हाँ बोलिए. ये इसीलिए ज्वाइन करो क्योंकि जब आप बिजनेस ओनर्स के आजू बाजू रहोगे ना, when you are around people who have been in business for 10 years 12 years, आप बिजनेस सीखोगे. आपका काम तो आपको आता है, पर बिजनेस सीखने के लिए बिजनेस करते हुए लोगों के आसपास स्विम करोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड बिजनेस फार बेटर. If you are not surrounding yourself with the right people, you are surrounding yourself with wrong people. So local SME, BNI वगैरह वो आप you will suggest I should join. I will strongly suggest that you should join. Okay. आपका बिजनेस का सीधा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. You will have to construct one step at a time. जितना मेच्योरिटी बढ़ते जाएगा बिजनेस का, उतना सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आते, उतना आपका प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग चेंज होते जाएगा. This is the short term solution. So what is the short term solution? Two parts. One, local that network. you meet, local network. Meet people who have been able to give you references so far. कोशिश करिए कि 4 लोगों को आप मिलो हर दिन. Okay, your source is Urban Ladder, Urban Clap, sorry. Okay, या उसके जैसी कोई भी वेबसाइट, because you want to meet people who have some brains. Okay. सेकेंड थिंग जो आपको करना है वो है नेटवर्किंग करनी है. थिंग्स लाइक SME चेम्बर्स, BNI, जहां पे आपको बिजनेस ओनर्स मिलते हैं. बिजनेस ओनर्स के साथ आप बात करोगे, उनसे समझोगे कि why are they doing social media? Are they getting benefits from social media? How are they generating references? How are they collaborating? How are they affiliating? ये सब कैसे समझ में आएगा? जब आप दूसरे किसी बिजनेस को देखोगे और उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को अलाइन करना सीखोगे. हम हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी खुद को दो. थर्ड थिंग, sir, I have this one. When we talk to other businessmen, like in our relation also, we cannot match to their this one na, because they are established and we have just started. So उनका जो रहता है, see the way they are working, that is different. Like a person who has an office, a person who has a foreign degree, say I have done architecture from London or anywhere, interiors, तो उनके साथ तो हम मैच नहीं कर सकते. ऐसे ये आपको पता है या ये आपका अजम्पशन है? ये मेरा अजम्पशन है. यू आंसर्ड. मैच शुरू करने से पहले आपने बोल दिया बैटिंग तो मेरे से होगी नहीं. बट वो उन लोगों से बात करते मीन्स see BNI, when you go, I have heard, I just inquired before only, कि you have to you have to bring some leads every day, there is some target for you all people. Correct. And all this stuff. but जब हमारा होगा ही नहीं तो we wanted जो मैंने मेरे फील्ड वाले लोगों से बात की कि वो उनका ऐसा कहना था कि no, this is not for us, as we have just started, we have to wait and we have to come to some stage and then we have to join BNI.
I'm specially talking about BNI. Okay. Assuming आपने BNI join कर लिया, suppose, ठीक है, and you are not able to meet the target, what will happen? They will throw you out. Yeah. Correct. And then you will come to the status that you are at right now. Correct. Correct. No. तो आपने लूज क्या किया? कुछ नहीं. You are at zero. You are at zero after that. Correct है. But assuming वो चल गया तो one of my colleague who had left job with me only, and I did not started with that full fledged. He started that way only, but he was BNI was a complete failure for him. So after learning his experience, I took a foot back कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है करके, because so here is what I would suggest, Aruna. Whenever you learn from somebody, don't think that उसके साथ ऐसा हुआ तो exactly आपके साथ भी ऐसा होगा. That's not learning. Learning is उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसने ये चीजें की, अब ये चीजें नहीं की, अब वो चीजें क्या आपके साथ रिपीट होने वाली है? If the answer to that is no, then उसके साथ जो हुआ हो सकता है आपके साथ ना हो. Do you see cricket? Correct. Mahendra Singh Dhoni is a wicket keeper, became the captain of the country. Nayan Mongia did not. तो महेंद्र सिंह धोनी को तो ये सोचना चाहिए था ना कि नहीं विकेट कीपिंग करूंगा तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा. बट ऐसा नहीं हुआ ना. क्यों नहीं हुआ? It was the same wicket keeping, it was the same sport, it was the same gloves, same ball, same team, same nation. Why was it different? It was different because he did it differently. Correct? और आपको सोचना क्या है? आपको सोचना ये है कि okay, he went to BNI or for that matter anywhere else. How did he use BNI? आपको उसके पास से उसी का स्टोरी समझ में आएगा. Then you should question कि ओ अगर इसके लिए नहीं चला तो क्या सब इंटीरियर के लिए नहीं चल रहा है? How can I find that out? Can I find that out? Can I go to BNI का website? Can I find that out? Why are there interior guys who are there? And if they are there, why are they there? देखो जो काम नहीं होता है ना वो जानना इम्पोर्टेंट है, पर उसके बाद ये जानना और भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो नहीं हुआ उसको अगर होना था तो क्या चेंज करना. बिकॉज दैट्स वेयर लर्निंग हैपेंस. मैं खाना बनाऊंगा, बकवास बनेगा, मुझे समझ में आ गया, पर वो समझ इज नॉट इनफ. अब मुझे ये समझना है कि ये जो खराब हुआ उसको खराब नहीं होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, तब तो मैं खाना बना पाऊंगा ना. अगर मैं ये सोच के बैठूंगा कि अरे यार इसने दाल बनाई, दाल इसकी खराब हो गई, दैट मीन मैं दाल नहीं बनाना, तो वो तो आधी लर्निंग हुई. करेक्ट? नॉट करेक्ट? yes. ओके. दूसरी चीज आपने बताया कि बिजनेस ओनर जो एस्टैब्लिश होते हैं उनके साथ आप मैच नहीं कर पाओगे. करेक्ट? आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई वांट टू हैव यू एक्सपीरियंस दिस क्वेश्चन. Tomorrow there is a session that we do with some entrepreneurs every week. It's called the Propel Board. Okay? उसका मैं आपको फ्री इनवाइट भेजता हूँ. कम एज एन ऑब्जर्वर. जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं ना, सारे के सारे वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ओनर, आप आओ. सब लोग के पास 20-30 जनों का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, कोई केसेस में उससे ज्यादा भी है. आप आओ और देखो उनके सवाल क्या है, देखो उनके बिहेवियर क्या है, देखो उनके माइंड ब्लॉक्स क्या है. हम सब ना एक ही खाना खाते हैं, हम सब के एक ही प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऊपर ज्यादा है. दैट इज व्हाई वी आर स्मॉल बिजनेस ओनर. So there is something that you will be able to take from everywhere. उसका एप्लीकेशन अलग अलग है. कोई 5 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, खाता तो रोटी है ना. So experience it for yourself. Okay. What else you suggest me for something like is it possible ke digital marketing, if I try to display my work which I have done, my experience, my experience, I put forward in presentation form or something that's going to help me? See, the thing is this, कोई भी टाइप का इंटीरियर डेकोरेशन का काम कोई भी घर में करेगा, भले वो सस्ता वाला हो या बहुत महंगा वाला हो, लग्जरी वाला हो, जो भी हो,
मे बी यू आर थिंकिंग के सस्ता वाला इसलिए मैं करूं बिकॉज लग्जरी वाला तो मेरे पास आने नहीं वाला है. नो, लग्जरी वाला नहीं आने के लिए मेरा, आई डोंट हैव दैट रीच ऑफ पीपल ऑफ लग्जरी. The question Luxury. is, See, the question sir, is, when I was doing the projects, there was mix. I was doing I was a project coordinator, project manager. So I have done 30,000 square feet also managed. I have coordinated with foreign architects also. I had interior designers under me. So I had a very good exposure of design and an understanding of it. Only I did not have that level of designer. Okay, but I can't say कि this I have done it. See, I have done a project at Lodha Firoza, but I can't tell that because it was through my company. So why I you can't cannot, say that? no, I can't take my client to that place because I have to show him that project. In case if I display this on my profile, then they'll say, "ठीक है, Aruna, if you have done it, let us go and see." Sir, I am not allowed because I'm right now. I'm not an employee. I don't have connections with my this one directly. So then how? And second thing was I what I feel is my USP is the budget and the times. I really have a very good hold on costing, which very few people have it in interiors, plus the time period. But ये दोनों को मिला के फिर interiors तो it is like, you know, restriction होता है हर चीज का. I can do best. So I started targeting people who are working, who does not want, who really wants to have service and technical service also. So which AC to buy, which chimney to buy, which music system to buy, all this stuff. Along with it, I give my interior designing free. And I was supposed to charge in service charges, like interior designing service charges. So that was my type of business which I was trying to propagate actually. So Aruna, here is what it is. You know, आपका जो core है उसको खरीदने का सबसे ज़्यादा benefit किसको होगा? So every person who wants to do interior design of their house. Okay, now assuming I have to do interior designing of my house, ठीक है, मेरे पास दो चॉइस है. एक तो है कि मैं एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर कंपनी के पास जाऊं, क्योंकि मेरे को सादा सुधा इंटीरियर डिजाइन नहीं करना है. अगर मुझे सादा सुधा करना होता तो मैं फिर पेंटर को बुला लेता, मैं कारपेंटर को बुला लेता, मैं कुछ ऑनलाइन खरीद लेता और मैं अपने आप से कर लेता. करेक्ट है. अगर मुझे कुछ आउटसाइड ऑफ द रेगुलर स्टफ करना है, दैट इज व्हेन आई विल गो टू एन इंटीरियर डिजाइनर. करेक्ट है. अब जब मैं इंटीरियर डिजाइनर के पास जाता हूँ तो मैं कौन से इंटीरियर डिजाइनर के पास जाना पसंद करूंगा? वो इंटीरियर डिजाइनर के पास जिसके पास आप जैसा कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी है. दूसरी चीज, अब वो कोऑर्डिनेटर आप जैसा अच्छा है या बुरा है ये मेरे को समझने की ताकत है क्या? नहीं है. तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि व्हाई शुड आई गो टू दिस इंटीरियर डेकोरेटर एंड नॉट दैट इंटीरियर डेकोरेटर. दिस इज वन. ओके. So end customer अगर आपके पास आता है, so he is not going to come because you don't know design or because you can do this well and not that well. People will come to you only when they see you as a complete solution to what they want to do. Okay. That's one. Okay. Because when I give it to an interior designer, I am not thinking मेरे को अच्छा coordinator चाहिए पर उसको design नहीं करना है, design मैं वहां से कराऊंगा. I am not thinking that way. मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं करना है और कोई ये सारी चीजें कर ले और बेटर कर ले रेगुलर से. करेक्ट. अब इंटीरियर कंपनीज जो होती हैं, जो कंपनीज इंटीरियर डेकोरेशन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सम ऑफ देम यू हैव वर्कड विद, उससे छोटी कंपनीज भी हैं जो इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोजेक्ट्स लेती है, इंटीरियर काम के प्रोजेक्ट्स लेती है. ऑफिस डेकोरेशन के, ऑफिस इंटीरियर्स के होते हैं, होटल्स के होते हैं, several other projects, right? Bungalows के होते हैं. Now all of these interior companies may have a problem with not being able to manage the project on time within the cost budget and get approvals from the client. हो सकता है उनको ये problem है. That is why one of your companies hired you, na? Yeah. So what are the chances that you probably can become an interior design company के consultant? You are consulting an already interior design company on how to manage a project within budgets and within time. Sir, at this point of time, it's very difficult.
The question is not that I'm not saying that you should do this. I am saying, could this be an opportunity? Yeah, but that is where I was needed. Na? I am on job on this profile only. So that's what I'm saying, Aruna. कि दो चीजें होती हैं कि एक जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करो. अगर वो प्रॉब्लम है ऐसा जहाँ पे कस्टमर को सारा रिजल्ट चाहिए तो आप वैसे अपने आप को पिच करो. आपका डिफरेंशिएशन कैन बी दैट आई कैन डू द सेम वर्क एट अ लोअर कॉस्ट. ओके, दैट कैन बी अ डिफरेंशिएशन. बट यू कैन नॉट से और यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑल्सो कि ये मैं कैसे दिखाऊं, वो मैं कैसे दिखाऊं. बिकॉज वो प्रोजेक्ट का आप हिस्सा थे ना, वो प्रोजेक्ट का जो भी हिस्सा थे आप, उसमें आपने एक्सपीरियंस गेन किया ना. वो एक्सपीरियंस मेरे काम का है या नहीं है? ऑफ कोर्स है. So if you were a part of Florensa ka project, you were a part of making Eiffel Tower, even if you did nothing, you just took a brick up, but you were a part of that team ना. तो मेरे को तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मेरे जो इंटीग्रेट कर रही है वो टीम में थी जो टीम ने इतना बड़ा काम कर दिया. So yeah, I was never thinking in that line. So Aruna, what I see ना, अभी बहुत सारे माइंड ब्लॉक्स हैं दिमाग में. ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. No, because sir, एक माइंड ब्लॉक है ना, उसका रीजन है. In my profile, in my company profile, I had written कि I have worked with some big company. तो वहाँ के पर्सन ने मुझे फोन करके, आई वुड रियली लाइक टू शेयर, मुझे बोला कि मैडम अगर आप हमारे यहाँ पे कोई आएगा तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने यहाँ पे काम किया, बिकॉज यू आर वर्किंग विद मी. आप तो हमारे it was that way. So see, whatever you are saying now, mind blocks that has developed because I have experienced something. So I'll tell you something. Mind blocks are always developed because of some experience. Correct है. बट वो माइंड ब्लॉक को डेवलप नहीं करना है, वो रास्ते को उसको तोड़ के आगे निकलना है. तो यू हैव टू टेल दैट पर्सन दैट ऑफ कोर्स आप मत बोलो कि हमने आपके साथ डायरेक्टली काम किया था, पर आप ये तो बोल सकते हो ना कि ये मैडम ये कंपनी में काम कर रही थी, तभी मेरा प्रोजेक्ट ये कंपनी ने हैंडल इन्होंने किया था. ये तो बोल सकते हो ना. मैं वही बोल रही हूँ, मैं गलत बोलने थोड़ी बोल रही हूँ. See, when I hire and he was such a senior person, so after that मैंने वो प्रोफाइल में से चीजें निकाल दी कि भाई वो there are people like this, like otherwise if you the way you are saying कि हाँ लोगों को अगर इससे मैटर करता है, then I really have a very very strong profile working with big companies and all. But मैं वही there was a mind block कि these people they revert back saying so आप ये क्यों लिख रही है, ऐसे क्यों कर रही है. Because मैंने क्या किया था, I made a company profile and had sent to them only कि you give me work wherever I was working. So I don't know whether I was right or हाँ. wrong. So अभी देखो, कोई भी बंदा आपको काम तब तक नहीं देगा when you are in the business, when you can do something that they cannot. Correct है. So if I reach out to you and I say, Aruna, I can consult you, but you don't want to get consulted, so can I sell anything to you? There. पहली बात वो. दूसरी बात ये कि प्रोफाइल में हमको झूठ लिखा ही नहीं है. मैंने ये प्रोजेक्ट में थी मैं, तो मैंने वही लिखा है ना. इफ यू वांट मी टू वर्ड इट डिफरेंटली तो आप मुझे बताओ, और अपने को कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना है. वी हैव टू से द राइट थिंग ओनली. I boastfully say that these are the kind of projects that I've handled. I've handled Dell computers. I've handled Chrysler Automotive. I was a part of a team, but being a part of the team, I had that opportunity to learn. Na? Is that something that will help you? My learning? Yes. So why should you not know? Why should I not advertise? वो काम तो मैंने ही किया था ना. Yes. Sir, can I approach to the people with when I was working with a company? They were my clients, and I'm in contact with them to send my company company profile to them. See, I've started my own company and I'm doing this work in case if you need my services. तो दो चीजें बताऊंगा मैं इसको. एक तो एथिक वाला ग्राउंड हो गया. इफ योर कंपनी इज रिस्ट्रिक्टिंग यू, जब भी आपने जॉब छोड़ा, इफ योर कंपनी हैज टोल्ड यू कि you cannot contact my clients, then you should not contact. Why I am saying this is one, because it is against ethics. Okay, if you are in the industry, you don't want to spoil the relation. In fact, even if you're not in the industry, you should not spoil the bridge that once you walk.
okay, because you never know कब वो bridge को वापस करना पड़े. It's wrong. Second is assuming ऐसा कोई contractual obligation नहीं है, and that client reaches out to you and says, I want to work with you and not with that company because of blah, blue, whatever. Then you should keep that company informed and say that, see, I'm taking this client because this client wants to work with me. You have restricted me to work with that client, so मैंने approach नहीं किया है, but the client has decided to work with me and I want to keep you informed that ये हम काम कर रहे हैं. I don't want to hide it from you. Okay, but कभी भी ये नहीं करना कि आपने किसी का client ले लिया. You know why? Because always it comes back. Tomorrow you will have 5 people working for you in your company. You don't want to do the wrong thing. People see. No, it was a big company. There's no contractual agreement as if such we cannot do or anything like that. But I as a prospective client, can I was just asking you this. See, you can. The market is open. Nobody can restrict you. So where do now, after all whatever you suggested, where do I start with my digital marketing, at what pace? At what So stage? Aruna, one, you have to leave your love for digital marketing. Okay. Okay. On this call, you asked me like 4 or 5 times already. Digital marketing करने के लिए पहला चीज जो मैंने आपको पूछा कि when you go on Google and you click on the website, why do you click on that website? You click on that website because you can trust that website. जब तक वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा. आपका ही एक एग्जांपल देता हूँ इंटीरियर के केस का. फेविकॉल पता है आपको? करेक्ट. फेविकॉल ने अपना मार्केटिंग कैसे किया आपको पता है? फेविकॉल ने सबसे पहले फेविकॉल का जो गम है ना, वो देना शुरू किया कारपेंटर्स. ओके, फॉर फ्री इन सम केसेस. कारपेंटर्स को वो उन्होंने दिया कि जाओ यूज करो यूज करो यूज करो, और बहुत टाइम तक वो करते रहे. और उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने टीवी कमर्शियल किया, पकड़ के रखो छोड़ना नहीं. अब क्या हो गया? अगर मैंने वो देखा है मेरे कारपेंटर को फेविकॉल यूज करते हुए और फिर मैं वो फेविकॉल का डब्बा टीवी पे देख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा माल यूज कर रहा है, रिकॉल हो रहा है. कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जब भी आप ऐसे यूज करते हो ना, इट इज यूज फॉर रिकॉल. फॉर अ स्मॉल ब्रांड ऑल्सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट. पर रिकॉल मतलब रिपीटेड कॉल. पर पहला अटेम्प्ट किधर है? Okay. ठीक है, got it. So especially for services, आप services business में हो, so first create your base. Let's say you know 50 people who can refer you. You know 100 people who are doing interior projects. And then वो 100 और बाकी 50, ये सभी लोगों को आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दिखते रहोगे ना, that's when your digital marketing works. It doesn't work any other way. You don't buy Colgate because you saw Colgate का ad, do you? ठीक है. So what else you want to tell me? That's it. So your action point is so many. First, meet 4 people, target 4 people in a day who can refer you. आपने ऑलरेडी मेरे को बताया 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, वो 3 प्लेटफॉर्म्स में से आप लोगों को मिलना शुरू करो. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एंड रिमेंबर वन थिंग, सेल्स में और बिजनेस में देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% सक्सेस. तो अगर आपने 10 जन को मिले और 10 ने ना बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चल रहा है. बिकॉज द रेशियो इज ऑलवेज 100:1. 100 लोगों को मिलोगे तो एक बंदा हाँ बोलेगा, फिर वो रेशियो इंप्रूव होते जाएगा जैसे लोगों को पता चलेगा कि इतने बंदे काम कर रहे हैं. ठीक है? तो अनलेस 100 people reject you, your job is not done and you can't say this is not going to work. Okay? 100 kitty parties, 100 hardware shops, 100 friends, वैसे. So that's your first thing. Second, very, very important stuff is get into BNI, get into SME chambers, get into TIE, and work with people who are far smarter than you. किसी ने कहा है ना, if you are in the room and you are the most smartest, then you are in the wrong room. Correct? So there's no point in working with people you can relate with, because वो तो फिर एक अंधा दूसरे अंधे को क्या बताएगा? Right? We have to sit with somebody who's made it to understand how.
I have something to say. Sir, जो आप बोल रहे हैं ना कि you have to sit with somebody, I just want to share this experience so you give me an other perception of that thing. He was an interior designer. So when I left my job, I somebody introduced me कि he was doing very good, very big into. So he literally told me कि अगर आपका नेटवर्किंग नहीं है, आपका पहचान नहीं है, आपका रेफरेंस नहीं है, तो आप ये बिजनेस करो ही मत. And So- he himself was a very big established interior designer who was doing residences for हीरा मार्केट वाले जो होते हैं ना, उनके लिए डायमंड मार्केट के क्लाइंट्स थे उनके पास. So the very first day was, or you can say I'm meeting all wrong people, but this was what we say, and he literally told me कि better you don't do this business because ये लोग ऐसे ही हैं और आपका रेफरेंस नहीं है, आपका नेटवर्क नहीं है, तो आपको ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. And Correct. quite established person. And this one, second one more, I met one more architect itself in the full form. She was like, she was also doing well, but then they did not give a good vibes like how you can do it, एक positive जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो जो भी इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस में वो उनका वैसा ही था कि क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, आपका तो अच्छा सैलरी चल रहा है, ऐसे. अभी उनको ये नहीं बोला था कि क्या मेरा इरादा है आगे का, बट ये that was the Hardik, that was the thing that they told us, like अभी आप इसको कैसे So they said the right thing. So they said the right thing. They just said it in a different way. मैंने भी आपको यही बोला ना, पहले अपना नेटवर्क बनाओ. उन्होंने आपको क्या बोला, नेटवर्क नहीं है तो ये बिजनेस नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा. तो वही तो मैंने भी बोला, मैंने कौन सा अलग कुछ बोला. आप तो बोल रहे हैं कि हाँ नेटवर्क बना के बिजनेस हो सकता है, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप करो ही नहीं, क्या करना है, रेफरेंस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो क्या करने का. एग्जैक्टली. सो दे आल्सो सेड द सेम थिंग ना, अगर रेफरेंस होता, अगर नेटवर्क होता तो करना चाहिए कि नहीं, ये पूछो उनको. तो वो लोग बोलेंगे हाँ करना चाहिए. तो दे आर सेइंग द सेम थिंग. दे आर गिविंग यू अ प्री रिक्वेसाइट कि अगर ये सब कर सकते हो तो बिजनेस कर सकते हो, अगर ये नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते. वही मैं भी बोल रहा हूँ. मैं द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज कि ये बनाओ, ये बनाना पॉसिबल है. उन्होंने भी बनाया ना, उनके पास नेटवर्क नहीं था क्या, पहले से ही था, जब से पैदा हुए तब से नेटवर्क था नहीं. उन्होंने भी बनाया होगा, पहले ही दिन तो 10 करोड़ की कंपनी नहीं बन गई. बट इट इज टफ टू डू दैट. बट देन बिजनेस इज टफ. अगर आपको बहुत अच्छा कमाना है, अपनी लाइफ बनानी है, यू वांट टू बी नोन, तो टफ चीजें करनी पड़ेगी. जो कोई नहीं करता है वही करोगे तो तब तो मिलेगा जो कोई किसी को नहीं मिलता है. So Hardik, after this meeting, I have come to three things, like great clarity on it. My first line of action is start meeting my local, building up my local network, then joining BNI and SME, this one. Third thing is कि whatever you said कि हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अभी नहीं जाना है. बिल्कुल नहीं. आपको पता ही नहीं वहां पे करना क्या है, वहां पे करना क्या है. And you can organically grow. So by digital marketing, you can organically place, give tips or whatever you want, whatever content you do, you can display your work, whatever you have done, whatever are your specialties on social media. This one, not an SEO or something trying to do it. Am I right? करेक्ट. Okay, sir. ठीक है sir. Thank you very much. I'll be continuing with that. And just send me an invitation. You were telling me about. I will send you an invitation. The meeting is tomorrow at 3 o'clock. Zoom पे है, आप आइए. Have an observation. See how the other entrepreneurs who are established, like you mentioned, what are their challenges? How do they go about resolving it? And you will learn a lot of things. Surround yourself with people like that. Okay. Thank you very much, sir. All the best. Thank you. you.